ऑलराइट, शुरू हो गया है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है. गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑन आदिदेव्स गुरु ज्ञान. And this time it's a slightly different face than the regular faces that you see on Adiv's Guru Gyan, and I'm pleased to have him here on my podcast. Really happy to have him here. I don't know, I'm a fool to have not called him on my podcast previously, but Ankit bhai has joined us from Almighty Blues FC. Ankit bhai, how are अरे you this आई एम ग्रेट एंड beautiful इट्स माय afternoon? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल इट्स माय प्लेजर टू बी हियर और यार ऑनेस्टली वही हो जाता है ना गुरुजी के साथ जो हो जाए यार, घर की बातें तो भूल जाते हैं लाइक इट हैपेंस काइंड हाँ. ऑफ बोथ वे सो Yeah. इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल बट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू बी हियर स्पेशली यार चेल्सी की बात करने के लिए तो यार इट्स आई एम ऑलवेज ऑन एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नो मैटर व्हाट हैज हैपेंड आई थिंक देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स सो इट विल बी रियली फन Yes, absolutely. So just jumping straight into it without further ado, uh, it was a very long season for us. I think 69 odd games. I think we played या या during this season. Such a long season, and हमने ये चीज़ भी पहले बात की थी. Before the season started, we were talking about the fact कि अभी इतना लंबा season हो गया, इतने सारे games हो गए, हम tackle कैसे करेंगे इस चीज़ को? Do you think we have successfully tackled the calendar? मतलब देखो मतलब there is lot of context into it right मतलब Hmm. we have done a kind of season जो लिवरपूल का था last season में with so many injuries plus इतने सारे problems so considering that context और इतने सारे games हमें पता था कि होने वाले हैं I think it was an extreme situation हाँ you can argue that probably हमारी scouting है recruitment है should have been much better to kind of tackle it much better लेकिन at the end of the day ऐसा नहीं है कि यार even during times of COVID where we were actually asked to play मतलब हर एक गेम खेलना ही था हमें तो I think Hmm. we have still been able to play a pretty strong 11 or at the end of the day you can talk about winning two trophies जो have eluded us for a long time plus being into finals so on paper you would say हाँ we have tackled it but Hmm. is it meeting our expectations? Probably not. So that's what we'll be discussing further. So for me, मतलब overall मैं Hmm. बोलूँगा Tuchel the things जो he has been going through, the things which the club has been going through, जो shock मिला वो कोई भी anticipate नहीं किया था और साथ में basically your two wing backs getting injured at the same time. I think वो एकदम worst case scenario जो बोलते हैं ना वही है. And आप जब recruitment करते हो when you start off as a club, even though you are a champions of Europe, आप ये नहीं Hmm. सोचते हो you don't think negative you know what I mean आप basically Hmm. you are still सही बात positive बोली. about the squad you are positive Hmm. about things around the club क्योंकि वो एक happy atmosphere of being champions of Europe so you Hmm. don't think the worst or it has happened हाँ मतलब arguably you can say that थोड़ा सा better recruitment could have been मतलब helpful लेकिन again I think in terms of numbers we had numbers or in terms of quality also Hmm. प्लेयर्स थे ऑन पेपर वो परफॉर्म किए कि नहीं वो देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवरऑल लेकिन हाँ आई वुड से मतलब आई एम स्टिल काइंड ऑफ जस्ट अबाउट जस्ट बिलो कंटेंट सच में बोलूं तो ओके. ओके, पर आप जब प्लेयर्स थे उसके बारे में जब बात करो तो शायद इट्स टाइम फॉर अस टू स्विच टू टूकल हियर बिकॉज we'll talk about the positives of Tuchel later, but let's just first cover the concerning aspects of how Tuchel handled this season. Rigidity, जो एक वर्ड है रिजिडिटी, वो हमको टूकल में काफ़ी दिखी व्हेन इट कम्स टू चूजिंग हिज टैक्टिक्स, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग हिज प्लेयर्स, बिकॉज स्पेशली प्लेयर्स से मुझे यही याद है क्योंकि आपने ना कभी साउल को एक एक्सटेंडेड रन ऑफ गेम्स दिया, ना बार्कली को तो चांस ही नहीं दिया आपने, ठीक है, कभी भी चांस नहीं दिया, ठीक है. तो मतलब आप आप देख रहे हो कि देयर आर टाइम्स व्हेन द टीम इज स्लाइटली क्रम्बलिंग बिकॉज ऑफ सच एन एक्सटेंडेड शेड्यूल ऑफ गेम्स, ठीक है. हम्म Why wasn't this thought of? Like, is there any reason that could have been in his head कि नहीं, so कि मुझे नहीं देना चांस उनको? Why wasn't that thought of? Because trust me, I think, correct me if I'm wrong, Saul, when he was benched finally, when he was benched finally, before that he was on a decent run of games. दो तीन गेम कप बहुत आई अच्छा थिंक खेला था. वाज इट द कप गेम अगेंस्ट स्पर्स वेयर ही एक्चुअली Yeah, प्लेड he was man of और the match as well in one game. वो He was बढ़िया a किया था लेकिन man. So I think what is, if you were Tuchel, what are you thinking by making these decisions? करेक्ट सो फर्स्टली यार जो भी देख रहे हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली न्यूट्रल्स मतलब द नैरेटिव हैज बीन दैट साउल हैज बीन द फ्लॉप ऑफ द सीजन एक्चुअली इज फार फ्रॉम इट आई एग्री विद गुरुजी लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ एज इंस्टेंस जहां पर मैंने भी अपने पॉडकास्ट में बोला है काफी बार कि यार Hmm.
why isn't Tuchel experiment अभी? Like it's not like we are going to win the league. मतलब there was a point Right, हमें पता था कि exactly. हम Good point. लीग नहीं जीतने वाले. हाँ मतलब Good point. you can argue that Tuchel just वो persona ना Tuchel का ऐसा है कि he's a little bit more safe than basically risk taker, especially in Right. Chelsea because of maybe आप बोल सकते हो the season which has gone, right? So he has seen a lot of negativity already. So he's going with the safe aspect. That's what I thought. But I think in a strange way again, like I'm not trying to defend Tuchel here, but आप देखो अगर Ben Chilwell for example अगर वो रहते fit, ठीक है, after the Juventus game, if at all he was fit, I was actually sensing here this was a time that okay maybe finally we can kind of rotate, we can go forward at the back क्योंकि with Ben Chilwell being there वो option देता है team को. With Malang Sarr being there, मतलब come on, like we all know that okay he is an upcoming center half जो left back भी खेल सकते हैं, but he's not really a hardcore full back. He's really a left center Right. back Right. in a three the back system where he's more protected. और इसके लिए मैं देखता हूँ यार मलंग सार wasn't really reliable to go for the back. At the same time, you can argue that इतने सारे stories आ रहे थे about Ziyech. So Ziyech is someone who plays very well in basically a free role on the right hand side when you're playing a 4-3-3 because वो cutback भी करता है, Basically, वो you wing भी करता allot है. an advanced playmaker वाला role to him on the right hand side. That's एग्जैक्टली all. एक फ्री रोल फ्लोटिंग रोल दे दो वहां पर ना वो पॉसिबल है ही नहीं आपके 3-4-2-1 में बिकॉज यू आर मोर हाँ, डिसिप्लिन्ड हाँ, हाँ, स्पेशली बीइंग अ विंग बैक हाँ. आप बॉम्ब ऑन करते हो ओवरलैप करना So होता है तो if यू हैव if टू गेट if Reese is not available on that wing, and if Hakim Ziyech को आप वो free floating वाला role दोगे, so there is no one to actually cover Hakim Ziyech का मतलब absence when he cuts एग्जैक्टली inside or when he drifts in, not cuts inside basically, drifts inside to मतलब be a little bit more central. So there is no one to actually run that length of the pitch continuously to and fro for the whole of 90 minutes to actually cover that gap. That's what you're बिल्कुल talking बिल्कुल about. एंड वाइस वर्सा एज वेल राइट और साउल का यार मतलब अगेन मतलब मे बी इट्स वर्कड अगेंस्ट साउल दैट वो इन द पास्ट ही हैज प्लेड लेफ्ट बैक आल्सो लेफ्ट विंग बैक आई थिंक फॉर एटलेटिको मैड्रिड तो Hmm. इन गेम्स आई थिंक टुकल ने यूज किया उसको बिकॉज अलोंसो से मतलब हम सब देख रहे थे इतना बेसिकली मतलब बवाल मचा लिया था साइडलाइन में किया नहीं अलोंसो क्या कर रहा है तू दैट काइंड ऑफ थिंग व्हेन व्हेन कम्स टू डिफेंडिंग तो ही हैज ट्राइड देयर और इन मिडफील्ड आई थिंक टुकल स्ट्रेंजली हैड फेथ यार एक होता है ना फैन का फेथ यार नहीं अब वी हैव एंगोलो कांटे he's the best in the world. But आज भी अब देखो तो Tuchel has gone record saying that N'Golo Kante is basically our Salah, he's a De Bruyne, Yeah, yeah, he's our whatnot. yeah. ना तो एक faith, there was an element of faith plus a safety that he was kind of still continuing with N'Golo Kante despite N'Golo Kante not being N'Golo Kante. You know what I mean? So that's where he was not seeing a lot of rotation coming. मतलब हाँ रॉस बार्कली मे भी आप बोल सकते हो but I think there was एक मैच था बीच में यहाँ पर रॉस बार्कली आया था and then he kind of got a great I think it was probably Southampton, where he got a great assist in the league. Or that was like an impact sub, na? Don't remember the exact match, but I think I know the moment that you're talking about. Exactly. हाँ, So हाँ, what happened is like with Tuchel again, maybe in the past with Pulisic also he has thought like Pulisic हमेशा देखता है Pulisic is a super sub. Again, I'm not trying to say that Pulisic is great, but the fact is वो एक बन जाता है ना. He kind of has I it in just his mind. हाँ, तो he's not flexible like you said. He is rigid in that aspect. यार नहीं वो एक रोल बन जाता है. तो Pulisic he always sees that way. Similarly, Ross Barkley he maybe saw that way क्योंकि आप देखो Ross Barkley was on the bench a lot of times. लेकिन towards the end especially. मतलब आपने वही my point is this कि I know Ross Barkley is a bang average player. ठीक है, Exactly. all Chelsea fans know he's a bang average player, but you know that आपका जो schedule है इतना packed है, you almost played as I said 69 odd games throughout the calendar year. How can you keep basically that first 11 या basically 13 14 नाम आपके रहेंगे to play in the first team? How can you do that? मतलब Yeah. you need to actually utilize everyone from your bench to actually cover for the whole calendar year. Why wasn't that done? देखो मतलब मतलब I have one more quick point यहाँ पर see देखो the kind of matches we had also मतलब it has to be taken into context here one is the Club World Cup ठीक है then we had basically we were in the cup competitions FA Cup हो गया Carabao Cup हो गया तो Tuchel is like यार भाई मतलब यहाँ लीग दिख रहा है कि लीग नहीं जीतने वाले तो he was still kind of playing his best or rather close to the best team और उसके दिमाग में एक और बंदा था जो पता नहीं for some strange reason मतलब कुछ ज्यादा ही बिलीव दिखा दिया मतलब as much as I love him we are talking about Ruben Loftus-Cheek यहाँ पर he has tried him हाँ, as center half he's tried him in central yeah, midfield true, right wing तो true, so flexibility true. दिखाना था ना with players he has done with one player in multiple positions Pulisic played as right Exactly, wing back very good point. तो वो थोड़ा सा I think is something that maybe he takes it as a learning next time क्योंकि यार
It is a squad game. Or Lampard made the same mistake, if you remember. And He also, did not use the also squad. what I was disappointed with, even when I saw the last game, Watford का मैंने lineup देखा. Mm-hmm. वॉटफोर्ड का लाइनअप देखा तो तभी भी आई डोंट सी रॉस बार्कली स्टार्टिंग. ठीक है, there were so many names on that team sheet who could have not started. We could have trusted our academy products. It was a null and void game for us. We had nothing to play for. We had Yeah. absolutely nothing to play for. Anyways, we are talking now. We will probably talk about some of the individual names जो है ना, जो आपने पुलिसिच का नाम लिया. ठीक है, now Mm-hmm. probably we talk about Saul as well. ठीक है, साउल के बारे में तो डेफिनेटली बात करें, बट लेट्स टॉक अबाउट सम इंडिविजुअल नेम्स हियर. ऑलराइट, पुलिसिच ले लेते हैं या लुकाकू ले लेते हैं. ठीक है, now when I'm talking about Pulisic here, Pulisic has had a frankly very underwhelming season, but do we rely on him to finish off chances? Because in effect he's a winger. Okay, in effect Yeah. he's a winger. Even if you talk about a Callum Hudson-Odoi, he's a winger. Even if you talk about a Hakim Ziyech, yes, he scores goals, but sometimes when he cuts inside, he's like, क्या बोलते हैं, वन वो हॉर्स विजन आ जाता है उस पर. ठीक है, वो हाँ, और कुछ बिल्कुल दिखता नहीं है. बिल्कुल. ठीक है, Hmm. तो आई मीन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज प्रोफाइल के प्लेयर्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली फिनिशर्स. सो जब वो फिनिश नहीं करते, यस बुरा तो डेफिनेटली एज अ चेल्सी फैन को लगता है. दैट हॉरिफिक मिस दैट पुलिसिच हैड रिसेंटली, दैट वाज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट. बट डू यू थिंक वी नीड, definitely we are in a need of inside forwards who can finish. It's not because of 100%. just, it's not just because of Christian Pulisic, it's because of the kind of players that we have had over the past 2-3 seasons. Yeah, ठीक I है. think उससे भी ज्यादा गुरुजी, I think it's the system that we play. आप you remember like under Antonio Conte जब पहली बार हम 3 the back गए थे, in recent times. So Right, it was right. clear that okay, we had that quality with Hazard, with Pedro, with Willian, where I know you won't आप rely नहीं करते Willian को to do that particular finishing job, but again Hazard was your goal scorer. You had at least 2 goal scorers up front, along with obviously Diego Costa in first season. So in under Tuchel as well, आप देखो the difference being वहाँ तो फिर भी यार we had basically a set of Fabregas initially, and then basically eventually we moved to a total proper double pivot system. लेकिन अंडर टोकल हमारे मिडफील्डर्स कितने गोल्स करते हैं? इफ आई नॉट रॉन्ग, कोवाचिच 2-3 गोल्स मारे, आई थिंक, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर एंटायर सीजन. Kante, we know that he's definitely not a goal scorer. Jorginho यार, even if he gets a chance by 5 yard away, वो इतना धीरे मारता है यार भाई, कैचिंग प्रैक्टिस ले लो. तो वो तो होने ही नहीं वाला. और लॉफ्टस चीक का कॉन्फिडेंस है नहीं. He used to be once upon a time, लेकिन वो है नहीं. तो we don't have midfielders who can score goals. हाँ, at the same time we have lost those wing backs in the season जो हम हमारे करते थे goals. Because of that हमें चाहिए भाई, मतलब in case एक भी wing back अगर fit नहीं होता है, we don't have like I'm not expecting Alonso की next season वापस रहे. That's what I'm going with. Definitely our wingers need to be those people who actually score goals. मैं तो बोलते आ रहा हूँ, they are more like you said, inside forwards rather than typical wingers. अगर हम सिस्टम चेंज नहीं करते, अच्छा अभी चेंज होता है क्या, लेट्स चेंज द सिस्टम. इन दैट केस मेरे ख्याल से योर विंगर्स become proper wingers, क्योंकि वहां Proper पर you wingers. have your number 8 moving or who can get in It's the box and score. it's like Conte's Inter tactic. ठीक है, हाँ. basically they wingers are wingers, as simple as that. They are entrusted with providing width to the game, and basically trying to supply the attackers who are in front, the two attackers who are basically, if you choose a 4-4-2 wide, तो आप वैसे चीज अगर आप करोगे तो करोगे, बट वो चीज नहीं करेंगे हम. तो वो यार, चीज तो हम नहीं करेंगे. लेकिन अच्छा आप बोलो लाइक अगर अभी नहीं करेंगे देन आर वी स्टिकिंग टू द सेम थिंग? मतलब हैज दिस वर्कड ओवर लाइक इवन 18 मंथ्स लीग में? इन द लीग आई वुड आर्ग्यू नहीं. इवन लास्ट सीजन रिमेंबर हमें गैरेथ बेल ने बचाया था इन द लीग. या ट्रू. ठीक है, तो इन द लीग इट हैजंट वर्कड पीरियड. 18 महीने काफी होते हैं टू एक्चुअली जज दैट. एंड फॉर मी दिस काइंड ऑफ सिस्टम कैन वर्क वेरी वेल ऑन शॉर्ट टर्म. इवन कॉन्टे का देखो ना, सेकंड सीजन में क्या हुआ था. We remember what happened, right? Second, third season, we know Conte system cannot evolve over a period of time. For Italy as well, here we have seen that he is basically, someone who structure रखे, micromanagement करे. Every person has a role, or the opposition cannot suss you out. We have been sussed. It is very clear. Or abhi we need something to change that, be it be personal or be it the formation, or like you said, like एक
flexibility चाहिए because of the fact that यार हाँ in games Tuchel does it a lot of times, but even the kind of flexibility that he's trying, there have been times when Reece James has been back, he's been tried in midfield at left wing back, like He's also the, left wing back also, जो yeah. And strong probably I'll point है tell वो you भी what, निकाल रहा है उसका. on left wing back he looks better than all of our wing backs on the Yeah, left he looks better, currently. लेकिन Because मेरा पॉइंट ये गुरुजी, लाइक उसका जो मेन वर्च्यू क्या है, उसका मेन वर्च्यू इज बेसिकली हिज स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑफ कोर्स द वे ही क्रॉसेस द बॉल. हैज ही बीन गिवन वो लाइसेंस कि भाई तू कर भाई, वी हैव लुकाकू, वी हैव हावर्ड्स, लाइक टू टॉल पीपल आउट देयर हु कैन एटलीस्ट यूज देयर हाइट. सो दैट इज माय बिगेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि यार, is Tuchel trusting our players enough to give them that freedom? और that freedom can only be given अगर आप सिस्टम चेंज करो, बिकॉज वहां उस सिस्टम में 4-3-3 फॉर एग्जांपल गिव्स यू far free roles on the pitch compared to basically a 3-4-2-1 where you have basically your exact role, और आप कुछ और कर दो तो there will be a major problem, क्योंकि यार ना तो अटैक में एक एक्स्ट्रा प्लेयर रहेगा जो यू वांट, ना तो डिफेंस में रहेगा, बिकॉज ऑफ again we have aging defenders on paper like Aspilicueta, Thiago Silva and the likes. You make a very good point about there about a tactical shift. Time for experiencing a tactical shift within the Chelsea setup. Seeing a tactical shift within the Chelsea setup, definitely it's high time we have that, because last season के एंड पे भी हम वही सोच रहे थे कि बैक थ्री के साथ हम कितनी दूर तक जा सकते हैं. Will we be able to sustain the whole season with this back three? And somewhere down the lines there were a lot of cracks, and we have kind of papered over those cracks with some gritty individual performances कभी कभी. ठीक है, तो पेपर हो गए हैं क्रैक्स के ऊपर, बट आई डोंट नो इफ यू आर प्रॉब्ली चैलेंजिंग फॉर द सेकंड स्पॉट. ठीक है, बट आई थिंक वी आर फार फ्रॉम दैट. नो अंकित, आई थिंक we are miles away from being a City and a Liverpool, or a Liverpool right now. I think our best bet is to keep this third spot for the next 2-3 seasons. ठीक है, is to बिल्कुल. contest for this third spot in the Premier League for the next 2 seasons, because frankly speaking बीच में तो ये भी डर था कि हम top 4 से निकल जाएंगे. हाँ, ठीक है. probably Arsenal kind of there. Arsenal has actually beaten us recently. वो game, I know it was, we are talking about Arsenal, जो इतना हाँ. inconsistent खुद ही, लेकिन एनुअल सीन है हमारा. एनुअल सीन है कि हम आर्सेनल से हमको हारना है. वही सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में when things matter, और उस पॉइंट में लगा था भाई हो गया भाई, मतलब वी आर गोइंग डाउन अ क्लिफ, वो हो रहा है. और स्पेशली कॉन्टे, मतलब गुरुजी यू नो वेरी वेल, लाइक वी बोथ आर कॉन्टे फैंस, मतलब द गाय नोज इट, व्हेन इट मैटर्स वो करता है भाई अपने टीम के साथ, ही मेक श्योर दे फंक्शन, और वो किया है इन द. आप देखो मतलब द वे ही हैज टेकन दैट फोर्थ स्पॉट. तो मुझे तो ये भी डर है कि इफ वी डोंट कंसोलिडेट दैट थर्ड स्पॉट व्हिच इज मच नीडेड राइट नाउ एट द लीस्ट, well, there is a possibility with Harry Kane, Son being there. Harry Kane might be back full time. Conte with a couple more signings जो किया है Kulusevski और Bentancur. I know Bentancur is the bench Exactly. also, but I'll come to you that never as know. well. He can, Yeah. they can overtake us. Who knows? And Arteta again, as much as हम हंसते Arsenal पर, next season में it'll be another year that he spent with this team. So they can only get better. I don't see them getting worse. So Exactly. there are a lot of question marks वहाँ पर. So I think Tuchel has said it right. Well, it's not about basically, as in we are not going to be, adding much. We are going to be rebuilding. एक rebuilding phase शुरू होने वाला है because of our personal kind of lot of experienced players जो जाने वाले हैं expectedly. So it's about keeping what you have. हाँ, one major addition is like we have a lot of loan players compared to say other clubs. So वहाँ पर I am hoping like a couple of people that we have, Conor Gallagher and Broha, if they can kind of एक ला दो the squad में, or they play that role which will allow us to change the system, like with maybe an extra forward, a proper forward, आप कभी कभी two up front खिला दो. जो वर्नर और लुकाकू ओके वे, he didn't have the confidence to play. We were waiting entire season, हम बात कर रहे थे गुरुजी, क्योंकि बिली भी आएगा वापस, बिली गिलमोर भी आएगा काफी. सो I'll talk about Billy Gilmore slightly, बहुत कम में, क्योंकि I want to go on to another topic here. Billy Gilmore has had an underwhelming season with Norwich, but I don't think so it's wholly due to Billy Gilmore, because the team as a whole has failed so miserably that a Billy Gilmore who is मतलब इतना ripe है वो in terms of footballing age, वो इतना ripe है. I don't think so it's great to judge a player in terms of in that context, because he's just very young
and you can't exactly put so much responsibility on him to just shoulder a Norwich team like that on his own shoulders. Can't do that, right? या बिल्कुल ये देखो विली गिलमोर का एक चीज है लाइक वी ऑल काइंड ऑफ मतलब चेल्सी फैंस स्पेशली मतलब वी sang last year he is the Scottish Scholes मतलब Hmm. it is easy for us to say मतलब again we cannot even compare not even close लेकिन the kind of football that he plays ना that is not too dissimilar plus वो एक बंदा है he can actually make it dirty on the pitch मतलब वो जा सकता है Yeah, tackles पे yeah, if he yeah, wants to yeah. वो डायरेक्ट करता है he dictates he basically the orchestrator जो बोलते हैं ना वो जॉर्जिनियो के Hmm. साथ में खेलता था he himself directs कि भाई तू यहाँ जा वो वैसा Hmm. प्लेयर है तो वैसा मतलब अगेन ही इज अ वेरी यंग गाय टू डू दैट नॉरिच के सिस्टम में नॉरिच की टीम में जहां है टेबल में हैविंग दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर एट सच अ यंग एज इज फार टू रिस्की तो आप देखो इवन इन द Yeah, सेकंड हाफ विद डीन स्मिथ ही डिड नॉट पिक हिम बिकॉज you are at that age bound to kind of make mistakes no make matter what mistakes. आप कितना भी चाहो Yeah, और with that player who kind of orchestrates if you're doing that that extra couple of seconds are gone or you are kind of losing possession इसलिए he came on as a substitute I think बहुत बार और whenever he yeah. started like you said he did well so Hmm. again we cannot put all the blame on him but is he Guruji is he ready for playing a squad role because abhi bhi are honestly technically his season has gone back his career has not really gone forward in this 1 year ठीक है Exactly. so So what he I'm would what want I'm game time thinking. So I think he would want game time at let's say a mid-table squad. I'm thinking. I'm thinking a squad like a Newcastle would do him well. Okay. I'm thinking a squad like sorry a team like let's say even if he goes to let's say any mid-table squad in the Premier League would do him well. Okay. maybe I'm an not Aston saying Villa यार under Gerrard they won't know that much yeah. I mean Vieira हाँ, आई मीन एस्टन विला मेरे दिमाग में वुल्स भी आया आई एम जस्ट सेइंग एनी मिड टेबल स्क्वाड हु हैज लाइक अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ देम मतलब व्हेन यू प्लेइंग अ मिडफील्ड थ्री ठीक है ही इज लाइक दैट वन पर्सन हु इज बिहाइंड स्क्रीनिंग द डिफेंस yeah ठीक है बट इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द लेफ्ट एंड राइट देयर आर टू मिडफील्डर्स हु आर स्क्रीनिंग हिम ठीक है सो in that system he flourishes a lot and we have seen that happening he flourishes a lot ठीक है yeah बट अगर आपको बाई चांस अगर उसको हमारे टीम में लेके आना है एंड considering how average Jorginho has been in the past few games ठीक है mm-hmm. if we are going by all the rumors कि Jorginho's future lies elsewhere why it's great to give Billy a shot because he has played in that particular position for us at a very crucial time when Lampard was there. ठीक है 2-3 गेम्स जो निकाले थे बिली ने उस पर्टिकुलर पोजीशन में बहुत अच्छे थे ठीक है सो would it be that much of a risk to probably try Billy out at least in the friendlies in that particular position? नहीं नहीं नॉट एट ऑल मतलब स्पेशली आप अगर मतलब हम बात ही कर रहे थे अबाउट चेंजिंग सिस्टम और Hmm. लाइक यू सेड ही इज दैट शील्ड दैट हु कैन Hmm. आल्सो प्ले मतलब दैट इज द एग्जैक्ट रोल जो हमें चाहिए Hmm. इफ सेम बिली गिलमोर आज के इसमें 2 साल और एक्सपीरियंस होता जस्ट विद द कॉन्फिडेंस एंड द नंबर्स हम तो लाइक एनी डे वी वुडंट हैव लेट हिम गो नो मैटर जो भी कॉस्ट होता ही वुड हैव बीन Hmm. लाइक मे बी नॉट टेकन राइट बट आई यू नो व्हाट आई मीन Hmm. राइट इन टर्म्स ऑफ जो Yeah. हैज बीन एट द क्लब फॉर लॉन्ग और हैज बीन देयर डन दैट Hmm. Unfortunately, वो किया नहीं in the last 12 months. So मुझे even on his personal basis, I don't see like I know वो he comes Hmm. across as a very confident individual. लेकिन at Hmm. the same time, यार you are already behind the race. You have to Hmm. get to the next level. And we are Chelsea Football Club. Whether हमें अच्छा लगे नहीं लगे, we have to kind of invest if we want to change the system. क्योंकि यार at this point in Hmm. time, we don't have a DM or a number 6 who can do both the things. ठीक है बिली Right. गिलमोर is one of them लेकिन like you said मतलब it comes down to basically Billy Gilmore. If he's Hmm. okay to kind of prove himself, be there like a Conor Gallagher, reportedly has told. Like, a difference. He's more confident. He has given the confidence to Tuchel to do that. Hmm. Hmm. So Hmm. there will be a rotation aspect. Like, will it really help Billy Gilmore next season? May I don't know. Like again, हम खेलते हैं भाई 60 games. I think if I'm not wrong, on average we play 60 Exactly. games. So Hmm. there is the argument. लेकिन मैं तो personally, if you really ask me, I rather have, despite Jorginho जा रहे, मतलब I rather have someone new and give Billy Gilmore a loan जहाँ पर यार एक clause He नहीं होगा flourishes a bit more. yeah, he actually Uh, plays a lot hmm. more because he is our future and we shouldn't let him go. That's for sure because वो Hmm. ऐसा player आज के दिन में आप देखो across clubs I'm saying very very टैमी few जैसी players गलती ना करे टैमी हाँ जैसी गलती बिल्कुल ना करे हाँ we shouldn't be बेसिकली doing that. स्पीकिंग लाइक ब्रीफली स्पीकिंग बट कमिंग डाउन टू इन्वेस्टमेंट्स ओनली अभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जब बात की हमने ये जो is it high time to probably move away from those
marquee signings और those marquee investments, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई marquee investment करते हैं, somewhere down the line it just fails, ठीक है, 7 out of 10 times it fails, and somewhere inside the club somebody needs to assess कि what is going wrong then before making that next investment. This whole marquee investment of Lukaku, ठीक है, हमने 95 million spend कर दिया एक ही प्लेयर पे, ठीक है, 95 million is not a small amount of money in the transfer market right now. 95 million हमने एक ही प्लेयर पे स्पेंड कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद हमने और एक प्लेयर लेके आए साउल को लोन पे, बस दैट इज अ ट्रांसफर एक्टिविटी, ठीक है, दैट वाज आवर ट्रांसफर एक्टिविटी. डू यू थिंक rather than probably doing that, let's probably list down three scout three players, ठीक है, एंडी रॉबर्टसन को भी जब लिवरपूल लेके आया था, एंडी रॉबर्टसन वाज नॉट हाईली कोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ अदर क्लब्स, तो एंडी Yeah. रॉबर्टसन को काफी सस्ते में ही लेके आया ना एंडी और रॉबर्टसन को. मतलब बहुत सारा मैं मुझे याद है मीडिया हैड क्वेश्चन दैट साइनिंग एज वेल इनिशियली. तो एग्जैक्टली, मतलब दैट इज व्हाट, मतलब यू नो इट कम्स डाउन टू द डेटा. मतलब अगेन डेटा ड्रिवन जो किया है ना, जो डेटा ड्रिवन लिवरपूल साइनिंग्स फॉर लिवरपूल, एग्जांपल. करेक्ट. हाँ, So that is something that मैं थोड़ा positive हूँ, because reportedly again I can only go with what has happened maybe for Burley and the consortium है for LA Dodgers. I believe they do the same thing, and if that is true and hopefully उनको पता है कि that is imminent any moment, यार they would have already done their homework and provided a lot of data already to Tuchel offline. मतलब I'm really hoping that अगर वो हुआ है whatever the team is coming up with. लेकिन एट द सेम टाइम लाइक कमिंग बैक टू रिक्रूटमेंट, लाइक लास्ट टाइम मुझे बताओ यार कौन था वो मार्की साइनिंग जो एक्चुअली हैज डन वेल इन चेल्सी. आई कांट रिमेंबर आफ्टर फैब्रिगास और एग्जैक्टली, मेबी इवन पेड्रो, यू मैं कैन वही कॉल बोल रहा नॉट हूँ. रियली मार्की, बट दैट वाज व्हाट इट वाज. एग्जैक्टली, मतलब एक बिग मनी साइनिंग्स, बिग मनी साइनिंग्स के हिसाब से which signing has done well for us in terms of big money signings? करेक्ट. एंड थियागो सिल्वा वाज ऑन फ्री, तो मैं उसको काउंट नहीं Was करूंगा on a इसमें, free. It's not a big money एग्जैक्टली. signing. When करेक्ट. I talk about big money signings, nobody has done well for us in the past at least 5 years. ठीक है, तो आप that's why I said, is it high time we probably move away from that big money market? That would also mean moving away from the Declan Rice prospect. ठीक है, देखो us मतलब moving. डेक्लन राइस का सॉरी बट there's a little bit difference here. डेक्लन राइस का प्रॉब्लम इज द इंग्लिश टैक्स है ना, there's a different element, वो एक अलग कैटेगरी होता है टोटली. तो True. प्लस वो एक्स चेल्सी है, तो अपने आप बेसिकली वेस्ट हैम चेल्सी का राइवलरी है, तो there's a lot riding onto it, इसलिए उसका वैल्यू बढ़ जाएगा. बट आप देखो तो आर्ग्यूबली at least in England, I would say Declan Rice has been one of the most improved players in the last 24 months. और Absolutely, no दोनों doubt. साल में इम्प्रूव किया है. He has मतलब वो एक कैरी फॉरवर्ड विद द बॉल वाला बंदा बन गया है. He is not your No player doubt. जो इंग्लैंड टीम में था यूरोस के साथ. He can do a lot more आज के दिन में. Plus he gets in your goals. He is basically a leader. Last 2 साल में he has proven that already with Mark Noble hardly playing. But yes, our Chelsea एक है कि are we going to be buying अंकित back भाई, again a player? that's what I'm saying. That's what I'm saying कि बहुत अच्छा प्लेयर है. मैं तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ उसके क्वालिटी को. बहुत अच्छा प्लेयर है. But we're again going to spend at least 80% of our transfer kitty on one player. And who was a player already? Who was a player already? 120 million we're going to spend on Declan Rice. I don't think so. We're probably going to get somewhere a transfer budget like a Manchester City. ऐसा 250 million हमको मिलेगा. ऐसा कुछ मिलेगा नहीं हमको transfer kitty. ऐसा नहीं मिलेगा. So can we afford to again go down that same lane that we went with Lukaku? ठीक है, spending It most should of be a the money on balance. one. I think it should be a balance. Like मैं बोलता हूँ example देता हूँ, Chouamani. Like everyone wants Chouamani आज के दिन में, right? We know that we are not favorites anymore. But हमने scouting शुरू की थी. Talk about Saul. Like the report said, Chouamani और Saul को हमने एक साल तक scout किया. भाई एक साल तक क्या scout कर रहे थे भैया? अचार बना रहे थे? क्या कर रहे थे वहाँ पर? So we had to basically, that decision making is a key. So it's coming down to basically अगर आपको अच्छा लगता है, last season Vlahovic की काफी बात हुई थी, in certain pods like including myself. लेकिन वही है, you have to at that point in time आपको decision लेना पड़ेगा, invest करना पड़ेगा. We have done in the past, we have to go that way. लेकिन at the same time, English अगर someone who has done well in English football, ठीक है, for me honestly मैं बोलूँ तो I need Premier League में वापस से at least try for the second spot right now. That is what I'm trying right now. So someone who has done well in England, no brainer भाई. आप
whether it costs you more, I think it's worth investing. रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है ना, एक होम ग्रोन स्टेटस वाला भी आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ होम ग्रोन प्लेयर्स रहने चाहिए आपके टीम में, तो आपके लिए एक एडिशनली एक होम ग्रोन प्लेयर भी आ जाता है जो चेल्सी एकेडमी से ही है, तो वो भी आ जाता है आपके, वो भी एक क्राइटेरिया रहता है आपके रजिस्ट्रेशन में व्हेन इट यार कम्स टू चैंपियंस लीग में रजिस्टरिंग भी हेल्प प्लेयर्स फॉर द करता है। प्रीमियर लीग और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चैंपियंस और लीग या इवन अदरवाइज यार, मतलब आप देखो, इवन रफीनिया फॉर इंस्टेंस, ठीक है, उसने किया है, इतने दिनों से आ रहा है यार, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, हाँ हमारे हाथ बंधे हुए थे अबाउट नॉट हैविंग ओनर्स एंड वी कैन टॉक फॉर्मली, भाई लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, इनफॉर्मली सब लोग बात करते हैं, दैट्स द रियलिटी ऑफ ट्रांसफर विंडो। So you can always agree things, offline, and then, have that, kind of verbal agreement, or, as a matter of fact, the Chelsea Football Club, हमें मिलेगा नया owner. You could have probably locked Rafinha down by now, to be honest. वो नहीं हुआ है. That's very clear for everyone to see. मतलब ऐसे कोई रिपोर्ट सडन से आ जाए तो अलग बात है, because we do some business behind, closed doors. But again, I'll be really surprised अगर हमें सुनने को मिला कि apart from जूल्स कुंडे हमने कोई कर दिया है already. जूल्स कुंडे is reportedly in London. लेकिन that is जो वहां भी देखो यार, ऑलमोस्ट एक साल से बात चल रही है। आई नो सेविया इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, बट व्हाइल आई एग्री ही इज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट, लेकिन भाई इतना ही एफर्ट आप अगर डालते किसी पर जो ही हैज प्रूवन इन इंग्लैंड, who बट is भाई basically दैट्स व्हाट nearby, आप it's easier. आपने यूज गुंडे का टॉपिक उठाया, दैट्स ग्रेट बिकॉज इट ट्रांजिशंस इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज यूज गुंडे बी that much of an improvement जितना हम पे कर रहे हैं उसके लिए, would be that much of an improvement over let's say a Mark Guehi or a Fikayo Tomori, ठीक है, यार ये तो ठीक है, पीड़ा है, पीड़ा प्रॉपर पीड़ा पे that's what I'm पैर रख trying रहे to सही में मतलब I will keep on asking this question because that question will remain unanswered, ठीक है, because that is the pain point of every Chelsea fan भाई, every Chelsea fan। मैं तो बोल के थक गया था इसके बारे में कि भाई मतलब कि वो यूज कुंडे के पीछे इतना जा रहे हो, ये तो सोचो कि भाई मतलब उसने इतना क्या कर दिया जो मार्क गुएही ने नहीं किया है, जो टोमोरी ने नहीं किया। मार्क गुएही इज हैविंग अ किलर सीजन एट पैलेस, टोमोरी वन द सेrie A title। Yeah. भाई ये I लोग think Mark Gay and Conor Gallagher got one got the player of the season for Crystal Palace, one got the fans player of the season. तो मतलब वो सीक्रेट नहीं है, और डिस्पाइट पीपल नोइंग दैट दे आर कमिंग फ्रॉम चेल्सी, मतलब इमेजिन दैट, तो पीपल हैव वोटेड फॉर now the ones who are watching they will tell me कि they didn't want to sign the new contract, guys. I'll just make it very clear from my end at least. I'm not working inside Chelsea, but I'm just giving you a viewpoint as a professional. Ankit bhai can also add on to this here. If as a professional I see that in the company I'm just at level 1, ठीक है, I'm at level 1, I have no ladder to climb to level 2, ठीक है, I have no ladder to climb to level 2, ठीक है, तो भाई if I've seen that happening, ठीक है, in my head I've made up this thing कि ग्रोथ नहीं है, निकलना है, ठीक है, ग्रोथ नहीं है, निकलना है, ठीक है, एंड द कंपनी व्हेन दे सेंस दैट what this is the kind of reaction that you are getting from that employee, like ठीक है, हम कुछ दे भी नहीं सकते तुझको, और क्या ही दे सकते हैं, फाइन, ठीक है, तुझको इतना पैसा दे सकते हैं बट तुझे लेवल 2 तक गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है, बट इतना सा पैसा दे सकते हैं, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। That's probably why Livermento left. Livermento kept on rejecting contracts because of that, because he didn't see a level above the yeah. level at which he was at that particular point of time. He wanted to probably step on to the next level. That's what he did with Southampton. Okay, he was one of the first names on their team sheet every time. Somewhere, some people are obviously very ambitious about what they want to do. ठीक है, इफ समहाउ एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट में भी शायद आप प्रोमिसेस तो एक डिलीवर कर ही सकते हो कि आप फर्स्ट टीम में इतने मैचेस खेलोगे, ठीक है, आप चेल्सी फर्स्ट टीम के लिए इतने मैचेस खेलोगे, ठीक है, सो इफ दीज यंग प्लेयर्स आर सीइंग अ सर्टेन लैडर टू क्लाइंब एंड गेट टू द फर्स्ट टीम, व्हाई वुड दे लीव चेल्सी, व्हाई वुड दे लीव मतलब चेल्सी? मेरा यार यहाँ पर अगेन वी आर गोइंग बैक टू द मैनेजर्स, और मे बी आप बोलोगे मैं थोड़ा बायस टू बीइंग एन ओल्ड स्कूल चेल्सी फैन, बीइंग लैम्पार्ड स्टैन, यार ट्रस्ट मी, अगर लैम्पार्ड रहता, मतलब अगेन आई लव टुकल टू डेथ, एंड आई वांट दैट दिस गाय शुड बी देयर, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, लेकिन वही है डिफरेंस, बीइंग दैट लैम्पार्ड वाज एक पर्सन जो बिलीव्ड इन यंगस्टर्स अ लॉट मोर, नॉट जस्ट फॉर द नेम सेक, ही एक्चुअली डिड इट,
उसने किया है। टोमोरी का हाँ थोड़ा अलग है बिकॉज आई थिंक देवर ऑफ फील्ड इश्यूज फ्रॉम व्हाट आई हियर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, और वो भी वहां भी डाबी काउंटी में किया है। इफ ही वाज देयर ही वुड हैव डन इट, लाइक टूकल का रिजिडिटी इज द प्रॉब्लम, और सैंपल साइज है। लिवरमेंटो, मार्क गेही, इवन बिली गिलमोर दैट सेड ही वांटेड फर्स्ट टीम फुटबॉल, तो सैंपल साइज क्या है लास्ट सीजन में? इफ यू रिमेंबर टुवर्ड्स द एंड गुरुजी, लाइक चेल्सी वर लाइक नॉट रियली देयर इन द लीग, हम हाँ चलो वी वर स्टिल फाइटिंग फॉर टॉप 4, लेकिन इट वाज लाइक वी वांटेड सम फेवर फ्रॉम अदर टीम्स। उस समय भी बिली गिलमोर आई थिंक हार्डली स्टार्टेड 2 गेम्स फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, एक फुलम का गेम है और एक मैन सिटी का गेम है, और एक मिस्टेक किया था मैन सिटी के गेम के बाद, एंड देन ही काइंड ऑफ डिडंट प्ले। तो वो विच वाज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। I was expecting कि बिली गिलमोर को अगर मिलता लास्ट फ्यू गेम्स, मे बी दिस सीजन में he would have been your missing piece, क्योंकि you had Kante, Kovacic getting a lot of injured, so again Livramento, Lamptey did brilliantly against Arsenal जो मैच we all remember as Chelsea fans, जहाँ पे Right. टैमी ने विनर किया था, that was a great game। Right. Right. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट गेम चेल्सी ने कितना खिलाया था लैम्पटी को, तो इट वाज अ क्लियर थिंग। तो दैट इज अ विजन दैट यू सी एज अ यंगस्टर, आप होते हो और आप अकेले नहीं होते, यू हैव योर फैमिली, यू हैव बेसिकली योर एजेंट्स एट दैट पॉइंट, एंड दैट इज रियलिटी इन फुटबॉल टुडे कंपेयर टू व्हाट यूज्ड टू बी। तो यू आर Right. बीइंग टोल्ड कि यार ये सैंपल साइज है, ये डेटा है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग इन द फर्स्ट टीम, यू प्रोबब्ली हैव 10 से 15 गेम खेलोगे, आप बाहर जाओगे तो यू प्रोबब्ली प्ले 30 से 35 गेम्स, यू माइट प्ले फॉर योर कंट्री, that there is a huge kind True. of incentive। And let's be honest, if you are in the English Premier League, when it comes to Livramento, Mark Gehi, आपको पैसे बनाने हैं, आपको मिलेगा पैसा, तो I don't think money is really a huge aspect यहाँ पर। And you are still young, you can always come back to Chelsea, sample size वो भी है, Chelsea always buys back players right from the days of Nemanja Matic, Yeah. ठीक है, Yeah. we always invest again, we don't hesitate, ठीक है। तो I think clearly for them to stick on to Chelsea was a big question mark because of the way Chelsea has handled these youngsters. Apart from maybe the Lampard era, we have not handled these youngsters very well. You can say that you should be so good like a Reece James or a Mason Mount to break into the first 11. यार भाई आप चांस ही नहीं दोगे तो ब्रेक कैसे करोगे? You have to first give chances, right? Yeah. Yeah. I think it's fair. Absolutely. It's kind of, I agree with the players what they've done. I don't disagree with that at all. But it is, onus is on Chelsea, bhai. You are managing them. It's on us to basically manage these youngsters very well. At the same time, Because new owners आ रहे हैं, तो maybe अब मुझे लग रहा है ना, क्या लग रहा है गुरुजी, that like you said, हमारे पास ट्रांसफर किट इतनी होगी नहीं, because going by their consortium record इतना पैसा देते नहीं वो लोग, but by reports I think वो देने वाले, maybe वो पैसे आने वाले by selling some more youngsters, that might be the way to go, by and that's a hard selling some more youngsters or probably by selling some first team players. So I'll come to that straight up, okay, before we discuss the positives of Tuchel and the team this season. Which are the three players in your head that you would want to see, which you would want to see sold? yeah, but I think I have no cause about saying this again. People who watch me on my channel know it, and Guruji के साथ discuss किया काफी बार। यार टीमो वर्नर ना, he is not a footballer anymore. I have to be very very honest and brutal यहाँ पर। I know वो 2 हफ्ते थे काफी बढ़िया, भाई टीमो वर्नर क्या गोल मारा है साउथहैम्पटन के साथ, हमेशा he does well and stuff like that. Like, let's be honest about it. Like, even I have played some element football for sure at some level. At very basic level आपको पता जाता है when you get the ball, you need to basically from your vision see Corner कि of ये your next eye. pass क्या Yeah. है, you need to have Yeah. it in your head। Yeah. Yeah. This Yeah. guy is blank, he does a blank turn, he doesn't know what he's doing। okay, when you're आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, आप that is not about confidence, that is something जो आप सीखते हो as a footballer when you हर turn, when मैच you पे आप स्कूल एरर नहीं कर सकते हो। right, or touches, yeah, we are talking about bad first touch and things like that, that is आप बोल सकते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस है, मे बी इतना गेम टाइम नहीं है, तो that is more about practice and confidence। लेकिन I think the basic element है like about getting inside the box, you are a striker, आप striker हो, he's turned into a winger after coming to Chelsea। I know he's not like a core number 9, लेकिन again he is a forward, तो you are not getting in the box when basically आपको क्रॉस आ रहा है and you're basically waiting for what, Christmas? मतलब this guy Timo Werner, trust me, he is not made for Chelsea Football Club। he needs एक टीम जहां पर he gets a lot of space, he creates space I for think himself। he needs to go back to Bundesliga where he will face opposition who maintain a consistent high line. highlight, Okay, yeah, who maintain a consistent high line, and he can easily try to make those in behind runs every time. Okay, and obviously German. I think there is more
it's a comfort zone for him. ठीक है, and German and Bundesliga clubs will easily snap him up because he has made that legacy there. ठीक है, so it वो एक रीसेल वैल्यू भी हमको मिल जाएगा अगर हमने इस बार उसको बेचा तो। अगर अगर नहीं बेचा तो रीसेल वैल्यू अगले सीजन मिलना फॉर टीमो वर्नर becomes a small issue. So yeah, बिल्कुल that's one बिल्कुल name. Yeah, one name, and again, मतलब it's easy for me to bring up names like Ross Barkley. मैं वो names लेना नहीं चाहता, सब लोग जानते हैं, मतलब Ross Barkley is one of them. But again, Yeah, coming to the second name, talking about midfielders, भाई again, Chelsea fans might not like it. The fact is, I love the guy. He was brilliant in the Sari. मैं literally I have been one of the flag bearers of this guy, Ruben Loftus-Cheek. I think ये 25 साल का हो oh, गया, if I'm Ruben not wrong. Loftus-Cheek, sorry. ठीक है, Okay, मुझे I लगा know दूसरे। that ability है, we don't have players who carry forward in the ball. लेकिन he cannot finish. He doesn't have that last decision making. Again, आप बोलोगे यार confidence नहीं है, confidence की बात नहीं है. This is about basically just having that thing that आप सोचते हो नहीं. This is the time when trigger has to be pressed. वो नहीं करता है भाई. He thinks a But lot आपको of things. आपको ये नहीं लग रहा कि he's been highly unlucky with the number of positions that he's been played in? Of course he is. लेकिन गुरुजी, we are in 2022. We are Chelsea Football Club. वो unfortunately बोल दो, you have to prove in the minimum appearance that you have in the position you like. Has he proven enough? Apart from the semi-finals of the FA मतलब Cup, वही बोल रहा हूँ कि ज्यादा प्रॉमिस भी नहीं दिखाया उसने कि मतलब उसको रख लें। पहले 2 गेम में दिखाया था खाली इन द चैंपियंस लीग, आपको याद है तो he came on as a sub. मैं बोल रहा था यार मैं भी हमारी सेम बात हो रही आई थी. एग्री विथ यू। हाँ वही आई एग्री विथ यू भाई, मतलब वो बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाता है। ठीक है, मतलब मिडफील्ड से भी फ्रॉम हिज फेवरेट पोजीशन दैट इज सेंटर मिडफील्ड। ठीक है, बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाता है। यू नो इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग टू रिसीव द बॉल ऑन द हाफ टर्न। ठीक है, एंड मेक दैट डैश राइट इन द सेंटर। सो इफ अ डिफेंडर इज क्लोज टू हिम, the ball will be lost by him. As simple Yeah. as that. He will lose the ball. If the Yeah. defender sticks to him at the back, he will lose the ball. That is for sure. एक कैवियट डेफिनेटली यहाँ पर, ये अगर टुकल यार कमिट्स कि यार आई एम गोइंग 4-3-3, then I think I may not want to lose him. Like again, it's based on that because for me, I still feel यार वो एक 4-3-3 में I think he has enough. मतलब again, Tuchel believes on his strength ना, तो strength में he can possibly utilize his body much more compared to जो roles खेला है. Again, वही we are मैं बोल talking रहा change of roles, हूँ, but वही बोल that's रहा हूँ what अंकित। best अंकित suits भाई him. वही बोल रहा हूँ कि स्ट्रेंथ में तो यस, इफ अ पर्सन इज टिकिंग बिहाइंड हिम, ठीक है, ही शुड नॉट he should not be easily, हाँ क्या बोलते हैं, he should not be easily dispossessed by that person. Ruben Loftus-Cheek should not be easily dispossessed, but why is he being consistently done like that is because वो बहुत predictable हो जाता है। ठीक है, Yeah. क्योंकि वो एज आई सेड वो वही डायरेक्शन पे लेगा, टर्न लेके जाएगा। ठीक है, एंड वही चीजें करेगा। he's done this same thing, same, he's taking the same decisions almost every game. I think that is his undoing. ठीक है, I also agree with you, Ruben Loftus-Cheek का time is up. ठीक है, I think that is एंड his लोन्स की कितना लोन्स पे भेजोगे भाई, मतलब आई नो इंजरी के बाद आया, बट आई थिंक दिस एज इज राइट. अनफॉर्चुनेटली ही इज रायन बर्ट्रेंड. आई नो रायन बर्ट्रेंड उस समय नहीं सोल्ड होना चाहिए था इन माय पर्सपेक्टिव, बट अगेन जो समवन फ्रॉम द एकेडमी जो आप चाहते हो कि ही माइट बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इन सर्टेन पोजीशन, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ है. अगेन मतलब कैवियट वही है, 4-3-3 अगर जाते हैं. अगेन थर्ड पर्सन आई वाज सेइंग अबाउट कैलम हडसन-ऑडोई, लेकिन कैलम हडसन-ऑडोई मतलब एज मच एज वो एकदम बिल्कुल नहीं किया है, द फैक्ट दैट he is still so young और वो improve कर सकता है if he is given the time. I think loan would be better. So I think the person जो एकदम ही fit नहीं लगा है चेल्सी में, it is clear for me by now is मलंग सर. I know काफी टाइम कम टाइम हुआ है, बट उस पे तो इन्वेस्ट ही नहीं किया ना हम लोग ने, फ्री में आ गया वो तो हाँ बट अभी वही है, तो वी माइट वांट टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट, जो भी है हाँ 4-5 ट्रू। मिलियन जो भी है, वी माइट वांट टू मेक सम मनी बिकॉज वी नीड. आई नो मतलब विद रूडिगर गोइंग, विद पोटेंशियली एस्पिलिक्वेटा गोइंग, मतलब आई एम इन दैट कैंप हु इज सेइंग दैट एस्पिलिक्वेटा शुड बी स्टेइंग इन द स्क्वाड नो मैटर व्हाट. हाँ स्टार्ट्स नहीं, बट हिज लीडरशिप इज क्रूशियल. एट द सेम टाइम आई may take one more name here, Jorginho. ठीक है, तो Jorginho का the दैट्स reason why I did not take Jorginho rather is यार अभी तक मैं श्योर नहीं अबाउट द सिस्टम दैट वी आर गोइंग. ठीक है, तो अगेन इट्स ईदर जॉर्जिनियो और लॉफ्टस-चीक, वन ऑफ देम, बिकॉज़ अगर जॉर्जिनियो को बेसिकली वी सेल राइट नाउ विद अ डबल पिवट सिस्टम और एस्पिलिक्वेटा आल्सो गोस, अलोंसो आल्सो गोस, भाई मतलब आपके लीडर्स कितने मस्त. Jorginho can't function in a 4-4-2 or a 4 in a 4 in a double pivot. Sorry, अगर दो मिडफील्डर्स खाली खिलाओगे ना बीच में, Jorginho can't function in that system. हाँ but the thing is Guruji, he has been in the club for a long time now, so you need at least one player who kind of understands the way Tuchel wants to play.
अगर वो Tuchel चेंज नहीं करते सिस्टम, दैट इज ओनली देन, राइट? बट अगेन लाइक आई सेड, इट्स वन बिटवीन जॉर्जिनियो एंड लॉफ्टस-चीक. One definitely Malang साहब की तो यार क्या ही तो बात करें, he is not fit for that standard, simply put, मतलब right? आपको मतलब पॉकेट मनी भी मिल जाए उसके लिए तो मस्त है, मतलब 5 से 10 मिलियन मिल जाएंगे, ठीक है, वैसे भी फ्री में आया है, ठीक है, तो मस्त से एटलीस्ट 10 मिलियन तो मिले तुमको, तो यू Yeah. गेट अ प्रॉफिट ऑन इट, डेफिनेटली एक वैल्यू मिल जाएगी आपको, सही बात है, ठीक है. What about Kepa? I wanted to ask you यार, मतलब अभी Mendy, मतलब there have been iffy You moments can this get a season. Nick Pope from Burnley. Sell Kepa, you get a Nick Pope from Burnley. But Mendy और Nick Pope, मतलब it's really difficult to manage, ना? मतलब imagine Mendy not I being. don't know Nick Pope if he would do, like if I'm imagining Nick Pope, ठीक है, I know you will not get too many minutes at Chelsea, but you will be playing in the Champions League, you will be playing in the Premier League, you will not be in the Championship, ठीक है. Nick Pope stands to learn a lot, ठीक है, at Chelsea, ठीक है, under Fair enough. Peter Cech would also be there, ठीक है, Peter Cech would also probably give his wisdom to Nick Pope, so these are some things that Nick Pope stands to benefit, ठीक है, Yeah. from हमारे coming. goalkeeping coach, लेकिन he has left Chelsea, right? As in, that's a big deal. Peter Cech has a lot on his plate next season में. Let's see, मतलब that will be interesting because the guy who coached Peter Cech himself has left Chelsea after so many years. I think it's more than a decade, if I remember right. Lolicon, Lolichon, how do you pronounce that? So he's actually left Chelsea. तो मतलब again for me, मतलब मैं सच बोलूँ तो I am in that space that Kepa also should have been given more time. मतलब again, unless we get like a bidder, कितना मिलेगा भाई Kepa को? We have to face a loss, you know, no matter what. I don't think हम profit कर सकते हैं from what he signed. तो यार उसको खिलाओ. That is what my solution would be, and I would say यार just balance करो and then we can go with it. Yep. But now let's just come to the positives of the season so far. मेरे लिए तो मैं बस बोलूँगा as the positive being is this was an extremely, as I said, a very long season, but a very tough season as a Chelsea fan because of all of the background things that were happening, contract negotiations, everything. Contract negotiations शुरुआत सीजन के शुरुआत से चल रहे हैं, डिफेंडर्स के साथ, लोगों के साथ, क्रिस्टेंसन, रुडिगर के साथ शुरुआत से चल रहे थे, बीच में ऐसे फुल बैन ही आ गया ऑन ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, हम एक लाइसेंस पे खेल रहे हैं, ठीक है, ओनर नहीं है. बिफोर दी फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी जो था, कप फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, ऑलमोस्ट नॉट बिफोर दैट बट हाँ बिफोर दैट वी न्यू दैट हाँ हमारा ओनर नहीं है, ठीक है. सो it speaks a lot about the character of this team and also about the fact कि मतलब when you talk about Tuchel as well, Tuchel has not just been a manager for us, he has been a spokesperson for us. He has handled so many questions from the media. Face of the club, yeah, literally. Yeah, Hats off to him. मतलब I can't remember one manager in since the time I've started watching football who has handled so many responsibilities within one season, ठीक है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट भी करेगा एंड every week he would decide which team plays out on the pitch and which is the tactical setup he would go ahead with, so he would also be interested with that. So it does take a huge toll on you. I think in that aspect Tuchel has done a fabulous job, okay, if you look at the bigger picture, okay, I think Tuchel has done a fabulous job by making us come third, okay, and even in from a stats perspective we are in terms of conceding goals, we have conceded the third least amount of goals behind Liverpool and Manchester City, ठीक अरे है. एक स्टार्ट बढ़िया था ना, मतलब we haven't kind of हाफ gone टाइम पे ना, behind half time हाफ वाला. टाइम पे हम कभी भी पीछे नहीं गए, दैट आल्सो. सो these are some stats that do, मतलब हैं, हम जानते हैं फ्लॉज हैं हमारे टीम में, डेफिनेटली फ्लॉज हैं. while watching games I think sometimes you want to gouge our eyes out, ठीक है, because of the kind of shit football we are seeing, ठीक है, but I think this is a season that we just wanted to end at one point of time, ठीक है, कि हाँ कि मतलब खत्म हो जाए ये सीजन, टॉप 4 आ जाए और खत्म हो जाए ये सीजन, ठीक है. एक टाइम पे यही चीज चली थी आपके भी दिमाग में. अरे वो रियल दो दिन थे, मैं लिटरली यही सोच रहा था रियल मैड्रिड के साथ, यू नो, सो क्लोज येट सो फार वाला सीन जो हो गया था उसके बाद कि नहीं भाई, मतलब लक इज नॉट विद अस. आप देखो विद द कोविड, विद द बेसिकली, यू नो, टुकल के साथ जो हुआ है पर्सनली, विद बेसिकली, यू नो, एज इन द ओनरशिप इश्यूज एंड व्हाट नॉट, इतने सारे इश्यूज के बाद एंड इंजरीज, वी हैव दैट, यू नो, वेयर नहीं भाई, लास्ट एक्स्ट्रा टाइम में वी कंसीड, और द पेनल्टीज है, 2 पेनल्टी शूट आउट जो हुआ ना लिवरपूल के साथ,
These are like, well, telling ki yaar, one thing is yaar, we have to improve as a squad, as basically we need to manage them better and all that. Lekin bottom line being we have to set the reset button abhi, or we better start right now, or expectations we have to keep low. And I agree with you, we have to be patient Tuchel के साथ. और again, hopefully he has learned from the mistakes that we saw, and there were mistakes, lot of late substitutions also जिसकी हम बात नहीं Yep. की इस बार, like compared to Yep. last year. So I think hopefully we'll have a better season up front. Again, lot of things right on जो ownership announce हो, by the time आप लोग जो देखे हो, hopefully हो जाए as per Hopefully हो reports जाए, होने correct. वाला है. लेकिन that is the key for me. मतलब without that I think Tuchel himself said like he has shown the white flag कि नहीं, अगर हम नहीं कर पाए जल्दी तो हम we lose players again, it'll be a rebuilding season. लुकाकू के बारे में what can we look forward to in the next season, because if the system is changed, ठीक है, if we somehow kind of bring players who can use Lukaku the way Inter used him, ठीक है, somewhere down the line I think so we have missed the trick with Romelu, ठीक है, because for a long period of time we used to probably play him as that forward target man. So basically, यार देखो Guruji, like for me, Lukaku is not your target man. ठीक है, now Lukaku is never going to be a target man. He needs space in front of him. He's not going to be हाँ, your last man. so He doesn't play well with back his back to the goal. So Lukaku is that kind of guy. He needs to basically do a lot more himself as well. As Baba comes in, Baba कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया. yeah, फ़ोन अपना घर यार पे छोड़ के yeah, बाहर चला गया था क्योंकि फ़ोन ऑफ हो गया था, तो कोई पॉइंट नहीं था. सुबह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर पे क्योंकि कल रात भर बारिश हुई है. फाइनली जयपुर में भी थोड़ी अरे गर्मी से पूरी राहत इंडिया में मिली है. बारिश हो रही है क्या साला, इतना क्या बारिश हाँ. हो भाई रहा है? इधर भी भाई मैं सुबह से थक गया हूँ भाई, अभी पॉडकास्ट के बीच में 2-3 बार लाइट गई है भाई. पॉडकास्ट के बीच में 2-3 बार लाइट. बट हाँ अंकित भाई, यू कंटिन्यू योर पॉइंट. अभी जस्ट अरे रैप नहीं अप करे थे बाबा, बट वो एक पॉइंट, वो एक क्वेश्चन पे मैं तेरा भी आंसर चाहना चाहूंगा बिफोर वी रैप इट अप. बट या अंकित भाई कंटिन्यू. तो यार देखो विद लुकाकू देयर आर टू थिंग्स. एक तो यार मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, वो जो किया था, जो भी बवाल मचाया था, वो अपना सीजन को डिरेल कर दिया था. दैट इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स अलोंग विद द बेन चिलवेल इंजरी. और हैज ही अप्लाइड हिमसेल्फ एज वेल ऑनटू द पिच इनफ? आई वुड से वो इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाया, बोथ इन टर्म्स ऑफ थॉट और इन टर्म्स ऑफ द वे ही हैज पुट. यस, चांसेस नहीं मिले उसके बाद. ही वाज आल्सो मेरे ख्याल से इंजर्ड भी था 3-4 मैचेस के लिए लगातार, ऑलमोस्ट अ मंथ. बट इवन आफ्टर दैट व्हेन ही केम, आप देखो मतलब 7 टचेस वाला जो हुआ था, मतलब यू कैन से दैट इट्स अ स्कैम. नहीं, वो स्टार्ट क्या ही तो बता रहे, नहीं भाई बहुत बता रहा है. वो बंदा अपने को वर्क नहीं किया व्हेन ही केम बैक. देयर वाज अ मेंटल इश्यू विद हिम इन टर्म्स ऑफ एक ईगो इश्यू, जो भी बोलो. और आपका फिटनेस देखो, ही हैज नॉट बीन एज फिट जो कॉन्टे के अंडर था. तो दीज आर थिंग्स व्हिच शो दैट ओके हिज मोटिवेशन लेवल्स वाज नॉट अप टू द मार्क. वो भी काफी बार उसका और एजेंट आके बोलता था, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. But at the same time, Tuchel shouldn't have looked into all those things. Or no matter what, like Chelsea को चाहिए था एक forward. ऐसा नहीं यार, Havertz was doing well, but he wasn't like scoring 2-3 goals, on average every second match. नहीं, he wasn't doing that. So we should have used Lukaku. और एक argument ये है, if in case हम Lukaku को ज़्यादा use करते, maybe just maybe in that most important FA Cup final, वो he would have been fit to be actually for that 120 minutes on the pitch, which would have possibly mattered. तो I would blame both of them. बट सोल्यूशन क्या है? दोनों यार बैठो साथ में यार. 98 मिलियन दिया है, ऐसे मतलब फ्री में नहीं देते उसको. और द फैक्ट इज लाइक ही इज कमिंग बैक टू चेल्सी. कम ऑन, लाइक ही कैन बी टोटली फॉल्स. व्हाट ही सेड इज दैट चेल्सी इज माय ड्रीम टू कम बैक एंड ऑल दोस थिंग्स. वो टोटली फॉल्स नहीं हो सकता. देयर इज सम ट्रुथ इन दैट फॉर श्योर. मैं तो अभी भी बिलीव करता हूं, क्योंकि आप उसको बेच भी नहीं सकते हो. एंड 98 मिलियन पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको ब्रेक इवन मिलेगा अगर आप बेचोगे उसको. तो नहीं है, रीसेल वैल्यू अभी करंटली लुकाकू पे आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू बेस्ट इज प्रॉब्ली प्लेइंग टू लुकाकू स्ट्रेंथ्स. ठीक है, कि आई थिंक वो अडेप्टेबिलिटी वाली जो चीज है, आपने देखा एक सीजन उनसे नहीं होता. ठीक है, तो बाबा, डू यू थिंक इफ वी प्ले टू लुकाकू स्ट्रेंथ्स राइट नाउ, आई थिंक हमको जो फिनिशर के बारे में जो हम बार बार बोलते हैं कि हम फाइनल थर्ड पे फिनिश नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते, आई थिंक इन माई हेड आई एम थिंकिंग कि लैटर हाफ में लुकाकू ऐसे हो गए थे कि उनकी कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट इंटरव्यू, आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड, पोस्ट दैट फैंस का बैकलैश, एवरीथिंग, सबका जो बैकलैश मिल गया, उसके बाद उनकी कॉन्फिडेंस इतनी नीचे गिर गई थी कि उसके बाद पिकिंग अप दैट कॉन्फिडेंस बिकेम रियली हार्ड फॉर. So is it very important for, how important is it for Lukaku to probably start off the friendlies, the pre-season with a bang,
and how important is it for us to see a system which is probably devised around Lukaku? इसमें है ना, मतलब एक बात आपको याद हो तो, कि लुकाकू ना माल्मो के अगेंस्ट जो अपना एक ग्रुप स्टेज मैच था चैंपियंस लीग का, उसमें ही वेंट ऑफ विद अ प्रिटी लॉन्ग, मतलब सेमी लॉन्ग टर्म इंजरी, मतलब 1-1.5 महीने का एक करेक्ट, हाँ, वो और वर्नर दोनों सेम गेम में बाहर हो गए थे। सेम गेम में बाहर है तो yes. उससे पहले कांटे और ये क्या नाम है, चिलवेल बाहर, चिलवेल को यूवेंटस वाले गेम में इंजरी हुई थी। तब तक लुकाकू वाज परफॉर्मिंग प्रिटी डिसेंटली। अगर आपको याद हो तो माल्मो से जब हम जेनिथ से जब हम 1-0 जीते थे होम में, लास्ट मिनट में लुकाकू ने हेडर मारा था, तो हमने कुछ क्रिएट नहीं किया था उस गेम में, बस एक एस्पिलिक्वेटा का क्रॉस एंड लुकाकू's हेडर एंड वी वन दैट गेम। तो लुकाकू वाज परफॉर्मिंग डिसेंटली वेल। फिर हम वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ड्रॉ करा लेते हैं, और वो सारे फिर वहां से जो सीजन हमारा थोड़ा डिरेल होने लगता है, क्योंकि हमारे पास लुकाकू नहीं है, चिलवेल नहीं है, कांटे नहीं है। वो इंटरव्यू उसी दिन हो गया था, उन्हीं दिनों में हुआ था वो, जब वो हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ड्रॉ किया था। उसको रिलीज किया गया 3 महीने बाद, 2 या 2.5 महीने बाद उसको रिलीज किया गया, या 1.5 महीने बाद, जो भी उसका टाइमलाइन था। एक गेम मुझे याद है, एस्टन विला के अगेंस्ट हम हार रहे थे 1-0, लुकाकू कम्स ऑन एज अ सेकंड हाफ सब्स्टिट्यूट एंड ही किल्स एस्टन विला सिंगल हैंडेडली. He and Hudson-Odoi for some strange reason was also playing well in that game. I remember Hudson-Odoi assisting Lukaku for one of the goals in that game. So Lukaku got a goal and he won the penalty at the end also. बिल्कुल. और क्योंकि he was running in behind, people were picking his runs and suddenly after, मतलब वो ब्राइटन के, हाँ, ब्राइटन के अगेंस्ट हम 1-1 ड्रॉ किया। आपको याद है रात को अपन ने 3:30 बजे पॉडकास्ट किया था कि हडसन ओडोई ने 2-on-1 सिचुएशन में, और वो मतलब वो बिल्कुल कीपर को वो दे दिया था पास, मतलब वो या फिनिश कर सकता था या जो भी था वो कर सकता था। उसमें भी लुकाकू ने गोल स्कोर किया था, इन विच वी डिड नॉट क्रिएट एनी चांसेस। फिर क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी लुकाकू ने स्कोर किया था। क्लब वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस में तो गोल स्कोर किया था। करेक्ट, दोनों स्कोर किए थे। तो इंटरव्यू के आने के बाद हुआ क्या, इवन द टीम टर्न्ड ऑन हिम, मुझे ऐसा लगता है। इवन द टीम टर्न्ड ऑन हिम। ठीक है, फिर उसने आगे, ठीक है, चीजें क्लैरिफाई करी। वो लिवरपूल वाला गेम वो स्टार्ट नहीं किया था स्टैमफोर्ड ब्रिज में, जो हुआ था 2-2, दैट वाज अ क्रेजी गेम। वो उसी गेम के पहले आया था वो इंटरव्यू। फिर वो टूकल ने भी बहुत मतलब क्रिप्टिक से स्टेटमेंट्स दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ही वाज नॉट इन सपोर्ट की ठीक है लड़का है, गलती हो गई, ऐसा नहीं बोला टूकल ने। टूकल वाज लाइक कि मेरे को बात करनी पड़ेगी उससे, अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं, मतलब जैसे क्रिस्टेंसन के लिए बोला था ना टूकल ने। हाँ, वैसा शील्ड लुकाकू को नहीं की, हाँ, वैसा शील्ड लुकाकू को नहीं किया गया। उसके बाद हैवर्ट्स बिकेम अ मेन मैन और लुकाकू को एज अ सब्स्टिट्यूट लाया जाता था। तो वैसे ही लुकाकू का खत्म हो गया। तो लुकाकू को इवन बू तक किया गया 2-3 मैचेस में तो स्टैमफोर्ड ब्रिज में। ठीक है, लुकाकू इज काइंड ऑफ अ प्लेयर हु नीड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो उसको इंटर में मिली थी एंटोनियो कॉन्टे से, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म किया था। इवन इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम ओनली। आप जैसे सिस्टम की बात बोले ना, पहले तो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए। टूकल बोलता है, टूकल अभी कौन सा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग खेल रहा है पिछले 5 मैचेस से? गोल कर रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि फॉर हिम टू फ्लरिश अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि जो तूने बोला ना, पिकिंग हिज रन्स, ठीक है, पिकिंग हिज रन्स। 7 टच वाला जो मैच था ना, उस पे फिर से बारिश चालू हो गई। 7 टच वाले मैच पे देयर वर at least 2 times when Antonio Rudiger could have passed to Lukaku. Lukaku showing the way कि भाई इधर दे, ठीक है, but Antonio Rudiger decides to turn inside and give a safe pass, and we have done it so many times during this season. क्योंकि when Lukaku, definitely मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर टाइम तुम Lukaku जो भी कॉल करे पास करो, but he is a striker. Out of 10 times when a striker calls for the ball, give him at least 4 times. 4 times at least trust the striker. एक और बात है ना, जब हम बीच में we were short on striking options, जब हम हैवर्ट्स को खिला रहे थे, लुकाकू was not fit, तो हो क्या रहा था, या तो पुलिसिक खेल रहा था दैट स्ट्राइकर, और ZH भी खेला है, तो क्रॉसेस आने हैं, ठीक है, तब तो क्रॉसेस आ रहे हैं, एंड व्हेनेवर लुकाकू कम्स ऑन टू द पिच, वो क्रॉसेस आना बंद हो जाता है। क्योंकि ना भाई हमने 2-3 मैच में देख लिया कि लुकाकू क्रॉसेस डाल के हेडिंग नहीं कर रहा है, तो पीपल हैव स्टार्टेड, our team नहीं कर रहे। our team didn't trust Lukaku. नहीं, मेरा पॉइंट ही वही है, तो आप पुलिसिक से ज्यादा तो लुकाकू पे ट्रस्ट करो ना। पुलिसिक इज
feet 10, 5 feet 9, Lukaku is 6 feet 4. तो भाई Absolutely. He's a उस पे आप striker. He's अरे he's a एफए कप फाइनल में striker. क्या हुआ था? एफए कप हम लोग बात ही कर रहे थे ना, लाइक लॉफ्टस चीक को आप अगर 100% लॉफ्टस चीक है वर्सेस 70% लुकाकू, आप फिर भी लुकाकू को बोलेंगे भाई तू रहे भाई पिच पर रहे, क्या लॉफ्टस चीक खेलेगा स्ट्राइकर? Exactly. That is natural. Exactly. लेकिन I'll come back to this Guruji and Baba, like you know, मेरा वही point था कि has Lukaku himself, I know like every person is different, you cannot compare him. लेकिन I'm just going back in the day, like you know, Jimmy Floyd Hasselbank, Guruji is a huge fan. मतलब the guy Yeah, who yeah. under Ranieri, there was a period जहाँ पर he was dropped. The guy proved himself despite Yeah. coming on the bench. और वो एक mentality issue है. I'm saying it. हाँ आप उसके साथ बॉर्न नहीं होते हो, but you have अंकित to भाई, being a 98 million, you have to. जो Context एरा के change बारे हो गया में अंकित जो भाई। एरा के बारे में जो बात करो ना आप, उस एरा में ना फुटबॉलिंग पर्सनालिटीज वर एक्सट्रीमली रगड, ठीक है, वर that is एक्सट्रीमली रगड इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी एंड मेंटालिटी, वर वेरी रगड. नाउ फुटबॉलिंग पर्सनालिटीज आर सुपरस्टार्स. दे आर नॉट जस्ट Like Rashford ले लो, footballers on the Rashford with pitch. Man United. Jose Mourinho, when he won the league with Chelsea for the first time in 2004-5 season, उसका statement ये था कि when I came into this team, all these youngsters like Joe Cole, Frank Lampard, John Terry, 24 साल के, they were already men. They were already men. और यहाँ पर अभी हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम देते हैं, अभी थोड़ा सा सेटल होने देते हैं, वो वाली बात है. तो फुटबॉलर्स हैव गॉट सॉफ्टर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ 100% इस पॉइंट से. पर्सनालिटी वर वेरी रोबस्ट, वेरी रगिड, वेरी इन योर फेस काइंड ऑफ पहले. अभी दे हैव गॉन वेरी सॉफ्ट. द गेम हैज गॉन टू सॉफ्ट फॉर माय लाइकिंग. गेम हैज गॉन टू सॉफ्ट, या. But आप उसको साइन कर रहे हो ना, when Lukaku was signed, wasn't he signed किया not only a striker but he's actual leader. जब मैं खुद पॉडकास्ट किया था, जब इतना हालैंड के साथ we were linked entire last summer and we were trying our best, नहीं मिला तो चलो go with Lukaku, just like back in the day we went with Morata. Though we said कि यार plus points क्या, Lukaku is getting lot more experience, lot more leadership जो बेल्जियम के साथ दिखाता है. He actually is he at least showcases himself कि यार he is your in your face kind of striker. लेकिन has he shown that enough as a substitute? मैं वही बोल रहा हूँ. मतलब अंकित भाई, आप भी बेल्जियम का जो आप देखोगे ना, हाउ दे प्रॉब्ली लाइन लुकाकू एंड हाउ दे यूज लुकाकू, इट्स वेरी डिफरेंट टू हाउ वी यूज हिम. It's very different to how we use him. यार बेल्जियम तो देखो नहीं है. हाँ, बेल्जियम तो नहीं है सही एग्जांपल. केविन डी ब्रुयना खेलते हैं वहां पर. केविन डी ब्रुयना लेफ्ट पे थॉर्गन हजार्ड, ठीक है. तो आप लेफ्ट पे ईडन हजार्ड जब फिट है, ईडन हजार्ड खेल रहे हैं लेफ्ट पे, बेल्जियम पे ईडन हजार्ड kills it consistently, ठीक है. तो आप केविन डी ब्रुयना को फॉल्स नाइन खिलाते हो, लुकाकू को एक राइट हाफ स्पेस पे खिलाते हो, लेफ्ट पे थॉर्गन हजार्ड भी आ सकता है आपके लिए. तो आपका ये फ्रंट थ्री ना बहुत क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी पेसी फ्रंट थ्री. एंड ऑल ऑफ दीज फ्रंट थ्री के जो ऑप्शंस है ना, ऑल फ्रंट थ्री के ऑप्शंस आर विलिंग टू पास टू ईच अदर, आर विलिंग टू यूज ईच अदर टू गेट द गोल, ठीक है. तो हमारे साथ क्या होता है ना, मोर ऑफन देन नॉट हमारे साथ क्या होता है कि हमने लुकाकू को ये लेके आया ये सोच के कि ही विल गेट अस गोल्स, बट व्हाट वी आर फॉलिंग फ्लैट ऑन इज कि जो कंपैरिजन टू द प्रीवियस सीजन इज कि हमारी फ्रंट लाइन प्रेसिंग लुकाकू वजह से और वीक हो गई है, ठीक है. बिकॉज लुकाकू इज नॉट अ प्रेसर, ठीक है. when you had a Timo Werner and a Kai Havertz and a Hakim Ziyech or a Christian Pulisic, all three of them probably playing together, ठीक है, we had a very active pressing structure, ठीक है. Now what we need to do is find a balance between being in possession of the ball and being out of possession of the ball in that particular third, in the final third of the pitch, ठीक है. बिकॉज वो बैलेंस नहीं ले पा रहे, और जब बैलेंस नहीं ले पा रहे तो टीम्स हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इजीली खोल पा रही है, ठीक है. तो हाँ बोल. मेरा ये पॉइंट है कि ठीक है, वो एक मेरे को भी आर्टिकल याद है एथलेटिक पे जब आया था, आई थिंक नवंबर दिसंबर में, कि हाउ लुकाकूज एब्सेंस मेक्स चेल्सीज प्रेस मोर लीथल अप फ्रंट. तो तुम चूतिए हो ना अगर लुकाकू को प्रेस करवाने के लिए लेके आए हो. तो तुम इसमें लुकाकू को विलन क्यों बना रहे हो यार? हाँ नहीं मैं तो हाँ मतलब मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मीडिया और बाकी चेल्सी फैंस की बात कर रहा हूँ जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं. वो नहीं समझ रहे, करेक्ट. मतलब अगर तुम नेमार को ले आके नेमार से तुम लिंक हो रहे हो और फिर टूकल उसको लेफ्ट विंग बैक खिला दे और फिर तुम बोलो कि यार नेमार तो यार क्या है यार, गोल सारे नेमार की साइड से पड़ते हैं, तो तुम बेवकूफ हो ना. That's what. नहीं सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है. इसलिए मैं बोल रहा था कि this is something that we have become weaker in, but
मैं वही बोल रहा हूँ कि दिस ऑल कम्स डाउन टू रिक्रूटमेंट। अगर आपको लुकाकू को खिलाना ही है, आप हाँ इस सिस्टम के अंदर नहीं खिला सकते हो, ठीक है? हाँ, आप क्योंकि लेके system आते change बॉबी करना ही फर्मिनो को, आप ले आते लिवरपूल से बॉबी फर्मिनो को, Yeah, आपको yeah. स्ट्राइकर से प्रेस कराना था आगे से, तो आप ले आते, हाँ जाते एग्जैक्टली बॉबी फर्मिनो के पीछे, हु इज अ डिसेंट फिनिशर एग्जैक्टली आल्सो, ले आते आप एग्जैक्टली बॉबी फर्मिनो को, आपके सिस्टम में भी ऐसे फिट हो जाते, हाँ, सेल्फलेसली बिल्कुल खेलते हैं वो, सेल्फलेस कोई रनर, दिक्कत नहीं, हाँ सेल्फलेस सेल्फलेस रनर, रनर है, प्रेस भी बहुत तगड़ा करते हैं। हाँ और हाँ क्लॉप ने तो एग्जैक्टली उनका मजदूरी कराई है, क्लॉप ने तो लिटरली, क्लॉप ने तो एग्जैक्टली उनको बोला है कि तुम्हारा अरे काम है आने हैवर्ड्स भी और वही साला बन से जाएगा गोल बाबा, कराना। हैवर्ड्स भी मुझे डर है कि वही बन जाएगा, बिकॉज हाँ आपको याद है ऑस्कर वी हैड इन द पास्ट हम्म, ना, जोसे मोरिन्यो हाँ टर्न्ड ऑस्कर इनटू दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। हमने हैवर्ट्स के बारे में ये सोचा भी नहीं था कि हैवर्ट्स हमारे लिए सेंटर फॉरवर्ड बनेंगे, ठीक है? क्योंकि हैवर्ट्स जब बायर लेवरकुसेन पे थे, ही वाजंट एग्जैक्टली अ सेंटर फॉरवर्ड, ही वाज अ राइट विंग में एडवांस प्लेमेकर वाला जो रोल बोल रहे थे ना अंकित भाई, जो हकीम जियश थे, ही वाज दैट रोल, ठीक है? एंड ही वाज अ सेकंड स्ट्राइकर एट बायर लेवरकुसेन, ही वाज नेवर अ सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है? ही वाज नेवर अ सेंटर फॉरवर्ड बायर लास्ट मेरे लेवरकुसेन, ख्याल 4-5 मैच खेला हो गया, आई थिंक दैट टू, आई थिंक एट मैक्स टू दैट पॉइंट इन टाइम मैक्स वो मैक्स टू ट्रांजिशन था, मैक्स तो मैक्स टू दैट्स ट्रू, मैक्स बट अगेन like I mean for Lukaku, keep him, play him to his strength absolutely, लेकिन वही एप्लीकेशन पर आ जाती है बात, आई थिंक ताली दो हाथ से बजती है, मतलब आई बिलीव, जनरली बिलीव इन दैट, so there has to be, considering यार जो भी बोलो उसका पर्सनालिटी डिफरेंट हो, he is what 29 if I'm not wrong, he is basically one of the main players in the team in terms of on paper, so he has to show it more on the pitch, or towards the end of the season luckily we have seen it, club world cup में he's done well, yeah Mama. एक जो चीज चेंज करने की जरूरत है ना, अगर हमको लुकाकू को चलवाना है, तो फ्रॉम अ 5-2-1-2 जो हम खेलते हैं आजकल, ठीक है, दो स्ट्राइकर के पीछे एक अटैकिंग मिडफील्डर, हमको 3-1-4-2 खिलाना पड़ेगा जो कॉन्टे खिलाता था। एक मिडफील्डर की स्क्रीन, एक स्वीपर की स्क्रीन 3 सेंटर बैक्स के सामने विल गिव दैट एक्स्ट्रा फ्रीडम फॉर अदर मिडफील्डर्स टू बी क्रिएटिव एंड टू पिंग दोस बॉल्स टू लुकाकू। वो जो दो स्ट्राइकर के पीछे एक बंदा खेलता है ना प्रेस ऐड करने के लिए, जब मेसन माउंट जो खेलते हैं, सही बोल रहा है। उनको खेलना है बीच में फील्ड के। एंड आई थिंक ना वो खेलने के लिए वी नीड अ लिटिल बिट मोर डेप्थ इन दैट नंबर 10 पोजीशन, अ नेचुरल नंबर 10, ठीक है? एज ऑफ नाउ अ नेचुरल नंबर, द ओनली नेचुरल नंबर 10 दैट वी हैव इज मेसन माउंट, Mason Mount. ठीक है? वी डोंट हैव डेप्थ इन दैट पोजीशन, ले आओ ठीक है? निको बरेला। हाँ बरेला आइडियल है उसके लिए, मैं हाँ उसके मेरे बारे में पास सोच में रहा ना, था। मैं सब्जी मार्केट जाऊंगा, मैं निको बरेला लेके आ जाऊंगा, 1 किलो निको बरेला भैया 1 किलो निको बरेला देना अरे भाई गैलेगर निको आ रहा है बरेला भाई, के का, गैलेगर निको करेगा। बरेला और लुकाकू का टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग था फिर, हाँ वो तो है भाई, वो तो ठीक है, है। दैट इज ब्रोजोविच उनके पीछे एज अ स्क्रीन खेलते थे, हम्म 3 सेंटर बैक्स के आगे, जो कि मेरे हिसाब से मतलब जॉर्जिनियो नहीं कर सकता है वो काम, बिकॉज आई जॉर्जिनियो थिंक तो ही, बोला अभी, अंकित भाई ने बोला ही वुड अरे लाइक टू 10 सी मिनट उसका जॉर्जिनियो। राइट किया हम तो। लॉफ्टस चीक पे मुझे भरोसा नहीं है, तो अपने पास पहली बात तो ब्रोजोविच प्रोफाइल का कोई प्लेयर ही नहीं है टू बी नहीं है, ऑनेस्ट, या ठीक है। अपन को क्या है कि वैसा एक होता है ना एंकर मैन कम डिस्ट्रॉयर टाइप का, आइदर यू हैव समवन लाइक अ रूबिन नेवेज और एन एनडीडी और अ बिसूमा, जो थोड़ा सा गेम का पेस भी डिक्टेट करे प्लस यू आर फिजिकल अ प्रेजेंस भी। क्लासिक डिफेंसिव मिडफील्डर, दैट्स इट। क्लासिक डिफेंसिव मिडफील्डर, तेरे को हाफ लाइन से आगे नहीं जाना, तेरे को जाना ही नहीं सिंपल। हाफ लाइन से हाँ आगे, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो आपको याद हो तो पेरिसिच और हकीमी इतना बॉम्ब करते थे उसकी वजह से आगे, करेक्ट बिकॉज करेक्ट, एसेंशियली दिस 3-1 जिसकी मैं बात करूं बिकम्स 4 एट द बैक इन या डिफेंसिव एग्जैक्टली ट्रांजिशंस, एग्जैक्टली, और फिर आपके विंग बैक्स आगे तो 6 हो जाते हैं ना। फोर एट द बैक भी मतलब आप जब आपके जो सेंटर बैक्स है, लेफ्ट और राइट सेंटर बैक्स है, जब वो स्प्लिट भी हो जाते हैं, जब हाँ तो वो यानी फुल बैक्स आउट ऑफ बन जाते हैं ना पोजीशन, आपके डिफेंसिव। हाँ हाँ, तो आपका डिफेंस मिडफील्डर पीछे आ जाएगा टू कवर फॉर देयर एब्सेंस, ठीक है? तो वो एक सेंटर बैक बन जाएगा टू पार्टनर स्पेयर सेंटर बैक इन बिहाइंड, तो वो चीज बहुत बहुत सही हो सकती है, बट हमारे पास वो प्रोफाइल वाला बंदा ही नहीं है, ठीक है? सिंस हाँ आप तो प्रोबेबल जब नेमार आप के पीछे जा रहे हैं। जब आप जब आप सोचते हो ना वैसे प्रोफाइल वाला बंदा, मैं अभी बोल रहा हूँ कि we you remember that picture of Jose Mourinho and John Obi Mikel standing at the touchline with John Obi Mikel ready to come onto the pitch? हाँ मतलब That that is was the like the picture we moment. need to see again. ठीक है? Because when you knew that John Obi Mikel was coming from the bench, you knew that the match is, and at that point of time, if we are leading, you knew that we have won the match. मैं ना इतना मतलब रिग्रेट करता हूँ ना, आई हैव सेड सो मच बैड थिंग्स अबाउट जॉन ओबी मिकेल पहले, क्योंकि उसके आते ही गेम का टेम्पो स्लो हो जाता था, जब मुझे गेम समझ नहीं आती थी। होता था क्या कि 1-0 हम
डाउन है और हाँ, जॉन ओबी मिकेल आके साइडवेज पासिंग करते थे और गेम का हाँ, टेम्पो स्लो कर देते थे, और एनालिस्ट, हम स्काई स्पोर्ट्स के एनालिस्ट को सुन के गेम समझते थे, तो अपना ओपिनियन तो हमें बनाना नहीं है। बना नहीं था। फिर जब जॉन ओबी मिकेल छोड़ के गए ना, पता तब चला मुझे क्या है। लगा भाई ये तो गड़बड़ हो गया। जॉन ओबी अब यहाँ मिकेल की बस भाई मतलब वो टैकलिंग गाइस, डू यू नो टैकलिंग जॉन ओबी मिकेल सर्वाइव्ड 11 चेल्सी मैनेजर्स? भाई क्या साहब, एग्जैक्टली यू न्यू ब्रो ही वाज दैट प्लेयर प्रोफाइल स्क्रीनिंग वाली बात करना, दैट्स जॉन ओबी मिकेल, दैट ये इज जॉन बायर्न ओबी म्यूनिख वाला मिकेल मैच भाई। भाई, मतलब व्हाट ही वाज, मतलब हाँ, नेक्स्ट लेवल यार वो है 2000। ही नहीं ना अभी, वो वैसा कुछ है हाँ, ही नहीं इस समय। वो आपके पास नहीं है, प्लेयर ही नहीं है वैसा। और आपके अगर ट्रांसफर मार्केट पे आपको जाना है, आप लेके आ सकते हो प्लेयर। आई टेल यू, कैल्विन फिलिप्स इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। ही हैज बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर हु लीड्स दिस सीजन, ठीक है। ही हैज इवॉल्वड इनटू दैट प्लेयर। मतलब इंग्लैंड के लिए वो एक डीप लाइन प्ले मेकर थे, बट इस बार वो टैकलिंग भी उनकी बहुत हार्ड टैकलिंग रही है, which is we need a hard tackler at that particular position. I think we need a hard tackler, and I pretty much know that is why we, जब हम हमारी midfield bypass हो जाती है, our defense doesn't exactly go close to the midfield to exactly keep a box type compartment type structure when we are out of possession. तो इसलिए people are driving at our defense. इसलिए our opposition more often than not when you're playing big games, these really good fleet-footed wingers are driving at our defense. So I think that is one area that we can definitely be better at. हमको हमको क्या, पिच कंट्रोल ना इन द मिडिल ऑफ द पार्क सुधारने की जरूरत है बहुत ज्यादा, जो कि हमारे पास नहीं है। वी कंट्रोल द गेम वाइड ऑफ द फील्ड, वी कंट्रोल द गेम अप टॉप। कंट्रोल एज इन कि हम कंट्रोल ही करते हैं, हम कुछ क्रिएट नहीं करते हैं, बस पोजेशन रखते हैं, ठीक है। जैसे ही बॉल मिडफील्ड में आती है ना, वी आर एट सिक्सेस एंड सेवेंस। वॉटफोर्ड उस दिन क्या मस्त से खोल रही थी बिल्कुल। वो तो उन्होंने उनकी फिनिशिंग लेट देम डाउन, वरना वो गेम हम नहीं जीत रहे हम उस दिन भी। वो वाली बात है। तो ये सब चीजें हैं जिसका मेरे हिसाब से टूकल बैठे नए ओनर के साथ, और पहले तो भी शायद डायरेक्टर का सीन सॉर्ट होगा कि भाई मरीना रहेंगी कौन या नया आएगा, उसके बाद जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। एंड बाबा, मैंने ये तो रैपिंग अप द पॉड मैंने अंकित भाई से तो ऑलरेडी पूछा है, बट इफ यू हैव टू ब्रीफली सम अप द सीजन सो फार फॉर यू, हैज इट बीन अ डिसअपॉइंटमेंट और आर यू जस्ट रिलीव्ड दैट द सीजन इज ओवर राइट नाउ? ठीक है कि बस हम टॉप 4 आ गए, द सीजन इज ओवर, ग्रेट, बस खत्म मेरे लिए, दैट्स इट। आई मीन मैं अगर रेट करूं सीजन को तो आई विल गिव इट अ 7/10 अगर मैं उस पे बात करूं। बट जितना एक टर्मोइल रहा टीम के अराउंड, एग्जैक्टली। और जिस तरीके से पहले तो इंजरीज की वजह से हम परेशान रहे, फिर ओनरशिप का पूरा सागा रहा, फिर उसके बाद बीच में तो ऐसा लग रहा था 2 महीने के लिए इट वाज चेल्सी वर्सेस द वर्ल्ड, एवरीवन वांटेड अस टू लूज, एग्जैक्टली। एवरीवन वांटेड अस टू गेट रेलीगेटेड। वही उस गुड सेंटिमेंट पॉइंट, में, आई थिंक वी डिडंट हाँ, कवर दिस। उस सेंटिमेंट को हम झेले, उससे हम बाहर निकले, काइंड ऑफ मेड अ कमबैक इन द चैंपियंस लीग 2 which gave us a lot of confidence। लेकिन जहां पर हमको गेम्स को किल करना चाहिए था, वी आर हाफ टाइम इनविंसिबल्स बाय द वे। एक एक रिकॉर्ड हमने बना लिया दिस वो सीजन। डिस्कस किया हमने, हाँ करेक्ट। वी आर हाफ टाइम इनविंसिबल्स। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, क्लब वर्ल्ड कप, यूएफए सुपर कप, लेकिन बस एक ये है कि या तो एफए कप या कारोबा कप में से कोई भी एक ट्रॉफी आ जाती तो हम फिर भी कहते हैं कि ठीक है, एक डिसेंटली सक्सेसफुल सीजन रहा आफ्टर ऑल दिस टर्मोइल। तो बस वो एक बमर है कि हम 2 फाइनल जाके सेम टीम से सेम तरीके से हारे। सेम तरीके से हारे। हाँ, एंड बट आपको ये भी शायद सिल्वर लाइनिंग है ये, ओनली सिल्वर लाइनिंग, बट शायद ये भी चीज है कि दैट टीम जिससे हम हारे हैं, दैट टीम इज प्रॉब्ली क्या वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंग्लैंड मतलब राइट नाउ। वही है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेस ट्रॉफी से मेजर करते हैं। हाँ वही है। अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट पार्ट तो फुटबॉल का यही है। सिटी को भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो हाँ, यूरोपियन सुपर पावर है बिकॉज वो रियल हाँ, मैड्रिड से हार गई, रियल मैड्रिड ऐसा हाँ। ऐसा आप नहीं बोल सकते बिकॉज सिटी का कोई ट्रॉफी अब नहीं मैं है तो कहता हूँ यूरोपियन। सिटी टाइटल भी हार जाती लास्ट डे अगर, तो हम ये थोड़ी बोल देते कि सिटी बहुत ही बेकार टीम थी। क्यों सिटी ने ऐसा नहीं है? लेनी देनी कर रखी थी सिटी ने भाई पूरे सीजन। इस बार वो कुछ एन मौकों पे स्लिप अप सिटी कर गए। डिजर्व्ड टू विन द टाइटल, लाइक हाँ, लिटरली हाँ, लिटरली। सिटी डिजर्व टू विन द टाइटल, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बस वही वाली बात है। और अगर लिवरपूल को हम एफए कप में हरा देते और चैंपियंस लीग मैड्रिड जीत जाती, तो लिवरपूल भी इतना कुछ तो नहीं अचीव कर पाते इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज। काराबाओ कप एंड एफए कप एवरी अदर टीम हैज डन इन हाँ देयर वो भी है, पास्ट सीजन। तो वो हम भी ऐसा है। भी नहीं कह सकते थे कि हाँ, लिवरपूल ने वो क्या ही उखाड़ फेलियर लिया था। इतनी, क्या उखाड़ लिया इतनी अच्छी फुटबॉल के लिए। लिवरपूल से ज्यादा ट्रॉफीज तो हम जीत गए।
हाँ 3 ट्रॉफीज exactly. जीत गए हम, मैन सिटी से लेकिन ज्यादा ट्रॉफीज तो हम लार्जर जीत पिक्चर, गए। सॉरी बाबा मैं हाँ। क्विकली काउंटर क्वेश्चन करूंगा। हम्म। लार्जर पिक्चर अगर देखो तो हैव वी गॉन फॉरवर्ड एज अ टीम इन नो 1 ईयर्स टाइम? नो इसीलिए तो आई एम ऑनेस्टली, मतलब आई नो इज योर ओपिनियन, बट आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आपने 7 आउट ऑफ 10 दिया है। दैट इज द ओनली रीजन, लाइक वी हैव, मतलब आप, But you have a हाँ legacy, क्या था मैं legacy हमारा बोलूँगा last year का? Champions League winners, और we have gone on to win the Super Cup and the Club World Cup, which we'll celebrate forever. Trust me, मैं इतने साल तक बोला हूँ यार चाहिए भाई ये ट्रॉफीज, इतने साल से हारे, लेकिन इस सीजन में apart from that, like हाँ कॉन्टेक्स्ट हमने कितनी बात कर ली है, yes, लेकिन बॉटम लाइन ये है, we are still light years away from Liverpool and Man City. मैं आपको एक और चीज बताता हूँ अंकित भैया। लास्ट 3 occasions when we won a major trophy से मतलब है प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग। When we won the Champions League, we got knocked out in the first round the very next season. Yeah. When we won the Premier League, we finished 10th the next season. When we again won the Premier League, we finished 5th in the season. तो मेरे को तो सबसे ज्यादा डर यही लग रहा था इस सीजन की, हम ऐसे ना बिखर जाएं जैसे पिछली 3 बार बिखरे थे। मैंने बोला भी था, याद है गुरुजी, चैंपियंस लीग जीत के, कि बस इस सीजन सही बिखर बात ना है। जाएं, क्योंकि मैंने होते देखा। पर तो ये हम भी चीज ऑल ये भी बिखरे चीज नहीं, नहीं हम अंकित बिखरे भाई, नहीं। I'll tell you why we are still there where we were before, and it's great why we are still there where we were before this season, because anyone who would have been at our place now, at least 80% of the time would have succumbed to what we have suffered this season. हाँ हाँ Anyone at our place, मतलब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी लेना पड़ेगा। आई थिंक अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर 50% भी कम होता, अगर हमारे पास ओनर होता ना हमारा, अगर रोमन अब्रामोविच वुड स्टिल बी एट द हेल्म, राइट, ठीक है, क्योंकि उसके ना होने से इतना ज्यादा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है ना हमारे वो लैटर हाफ ऑफ द सीजन में, ठीक है, इतना ज्यादा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है ना कि बिकॉज आप सोचो, व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, when you have suddenly been given so many added responsibilities on you that you never envisioned of having. Did Tuchel envision of probably answering questions about the Ukraine war? No. ठीक है, did Tuchel ever envision questions about probably कि भाई तुम्हारा क्लब कब तक सॉर्ट होगा? नहीं, ठीक है। अगर रोमन अब्रामोविच होते, रूडिगर अभी तक हमारे पास होता, ठीक है, Rudiger would have still been present with us, and we would not be fretting about who would probably take Rudiger's position, because that's a huge gap to fill now. That's a huge gap to fill now. So, as a whole, if you're looking at all of these external factors, I think I'm still content. ठीक है, I'm content because we could have easily nose dived. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने अंकित भाई को ही बोला था, बाबा को बोल देता हूँ, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर डेफिनेटली स्कैर्ड कि हम टॉप 4 आएंगे कि नहीं, ठीक है, क्योंकि आर्सेनल और टॉटनहम का मोमेंटम वैसा था। बट वी नेवर ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टॉप 4, ये भी एक बात है। एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली थर्ड पे ही थे, हम थर्ड पे ही रहे एट द एंड। फर्स्ट पे एग्जैक्टली आए, सेकंड पे और थर्ड पे, थर्ड से नीचे हम नहीं गए। तो मैं वही, आप लास्ट सीजन देख लो ना लिवरपूल का, दे हैड इंजरीज टू देयर की प्लेयर वर्जिल वैन डाइक लास्ट सीजन, ठीक है, और भी उनको कई सारी इंजरीज हुई थी, उनके मिडफील्डर्स ही नहीं थे एक टाइम पे। तो बीच में तो एक शायद गेम आया था जिसमें जॉर्डन एंडरसन सेंटर बैक खेल रहे थे, उनके पास सेंटर बैक्स भी नहीं बचे थे। और फिर वो क्लॉप के मॉम पास्ड अवे, एलिसन के फादर पास्ड अवे, तो वहां पे भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। तो हमने देखा कि एक जो टीम प्रीमियर लीग जीती थी इतने कन्विंसिंग फैशन में, वो भी स्ट्रगल करी है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द फील्ड इश्यूज। तो एंड वी हैव वन 2 ट्रॉफीज while doing that, तो आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ सीजन, इसलिए मैं इसको 7 पॉइंट्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10। और दिस इज एक और चीज मुझे क्विकली याद है यहाँ पर, सॉरी, लेकिन मैं आई जस्ट रियलाइज कि यार टाइमिंग भी एक चीज होती है। रिमेंबर लुकाकू का जो इंटरव्यू था नॉट रॉन्ग लिवरपूल के गेम के जस्ट पहले था, देन वी हैड बेसिकली लूटन टाउन, आई नो इट वाज अ नॉकआउट, हमने जीता था, लेकिन वही है रोमन अब्रामोविच का न्यूज़ वाज दैट ऑन दैट डे, मतलब काफी ज्यादा टाइमिंग हो जाता है। वी आर बिहाइंड भाई लूटन टाउन के गेम में, तो वी आर बिहाइंड ऑन दैट गेम। We still came up. So, हाँ, मतलब I'll go with Guruji. I'm still content. Put it that way. Yeah. So great. That was I think we've covered it all. Great. Thank you guys. अंकित भाई thank you. आप मेरे साथ एक पूरा 1.5 घंटा रहे, crazy, ठीक है। And बाबा thanks for joining in late, but काफी सही opinions आए,
ठीक है, from both of you guys, whoever still watching, please like target आप कंप्लीट कर लीजिएगा. काफी अच्छी बातें बोली गई हैं, और अगर आपको कोई और बातें सुननी है तो प्लीज कमेंट्स पे डाल दीजिए, ताकि हम इसको कोई और फ्यूचर पॉडकास्ट पे ले पाए, या मैं आपको कमेंट्स पे ही रिप्लाई कर दूं. So thank you all for watching, and please go and subscribe to the channels of these beautiful people here. Almighty Blues FC तो उनका है. Almighty Blues FC तो नाम है, ड्रॉग बाबा भी अगर नाम है ही है उधर, ठीक है. अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड डेफिनेटली आईदेव गुरु ज्ञान को भी कर लीजिएगा. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर, एंड प्लीज कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई, एंड whichever flag you want to fly high, please do that. Thank you. Bye bye.